तो बेटा बताओ, could you frame certain questions, some questions along those themes? Let us take up one by one. Yes, sir. Sir, first question, as it was law and then Sanskrit. So first question is why a shift from law to Sanskrit? And so secondly, being Sanskrit, it may be asked that law seems to be a modern choice, kind of a subject of a professional modern choice, but Sanskrit is so antique. How come this major shift? Shivani, Yes, you just see very carefully your video. Your yes, speaking pace is very fast. You okay, just try a similar problem we experience with Bhavna. yes, sir. As we are trying to control you, we try to control Bhavna. Also, we try to repeat again and again. When you Yes, speak a bit slow. Now start. okay, sir. Hmm. So, sir, this question can be asked in this way also. Then this Sanskrit and then PhD. So it seems like an academic career and already an academic career. Then why such a shift to administration? And then some counter questions like diversity can be found in both, and there may be less salary in administration, and in a permanent post of academics, I may get 1.5 lakh salary also. So one question can be that also. And then what is ICAS? As I'm doing PhD under ICAS project, so some questions related to Indian knowledge systems and some further cross questions may be asked. Then Falit Jyotisham, is can Falit Jyotisham be considered a science in modern times, or is it even relevant also? This question can be asked. Then relationship of Falit Jyotisham with administration, if any, relationship of Sanskrit with administration. This then Hindi oratory. So it means that if Hindi oratory is my hobby, then how come I chose Sanskrit as academics career and not Hindi? This may be a particular question. And then like Sankhya philosophy, why Sankhya solely? Why not other philosophies? And how come a particular person of such a young age got involved into philosophy? That may be asked at an extent. So, and sir, then some further cross questioning on I guess be like that we are having Chandrayaan 3 also. We are having many scientific missions. How the old planetary knowledge can help, if at all it can help in modern sciences also. This way, sir. एक और सवाल है शिवानी, जो भारतीय गणित ज्योतिष है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ एंशिएंट इंडिया में लेके जाओ। Yes, sir. जो इंडियन जो मैथमेटिकल एस्ट्रोनॉमी है, भारतीय गणित ज्योतिष, Yes, इसकी sir. जो महत्वपूर्ण, अच्छा है आप नोट करते भी जाओ, जो जस्ट यू मे राइट ऑल्सो, जस्ट राइट ऑल्सो, जो भारतीय गणित ज्योतिष है, इसकी जो महत्वपूर्ण व्याख्याएं हैं, Yes, sir. यह ईसा पूर्व की जो अंतिम कुछ शताब्दियां हुई उसमें हुआ था। ये कहाँ लिखा है? ज्योतिष वेदांग और सूर्य प्रजापति, इन दो ग्रंथों में इसका जिक्र हुआ है। आर्यभट्ट पहले ज्योतिषी थे, तो इफ यू कैन से हु वाज द फर्स्ट एस्ट्रोलॉजर, आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट पहले ज्योतिष थे जिन्होंने जिन्होंने गणित ज्योतिष के अलावा जो बुनियादी प्रश्न थे, बुनियादी समस्याएं थी, उन पर सवाल उठाने की बात स्टार्ट की। Yes, अगर हम देखें तो वारामिहिर की जो कृति थी उसका नाम था ज्योतिर्विद्या। उसको हम 3 भागों में बांटते हैं। ये है ज्योतिर्विद्या गणित, जनपत्री और फलित ज्योतिष। जो ये विभाजन था वारामिहिर का, इसे आर्यभट्ट ने स्वीकार नहीं किया था। उसका कारण क्या था कि वारामिहिर ने गणित ज्योतिष की अपेक्षा जो फलित ज्योतिष है उस पर ज्यादा बल दिया था। yes, जिसने जो गणित ज्योतिष का जो वैज्ञानिक अध्ययन था उसको नष्ट किया था। yes, तो जो sir. वारामिहिर की सबसे जो इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग जो रचना है वो है पंच सिद्धांतिका। अब ये आपको जानना कि व्हाई यू वांट टू नो दिस, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, कम in this piece of information, why you know this? Because Sir, yes, sir. yeah, tell me.
See, because my subject is Phalit Jyotisham, and we are doing very much like a lot of things in the field of astronomy today. So that's why there You is a this piece of information, you mug it. The moment they ask about the Falit Jyotish, you try to explain all this way. yes, आपका टॉपिक फलित ज्योतिष है, फलित ज्योतिष पे कोई सवाल आता है, आप उसको ऐसे स्टार्ट यू ट्राई कि ये इंफॉर्मेशन आप सप्लाई हो जाए. ये 4-5 लाइन ज्यादा बड़ी नहीं है, ओनली 3-4 लाइन 4-5 लाइन्स है. ओके. yes, sir. तो ये क्या है, ये बहुत ज्यादा आपको एक एक ऐसे एस्पायरेंट के रूप में आपको एस्टेब्लिश करेगा कि जिसको बेसिक देखो, ये क्या है, एक ये कॉमन सेंस भी नहीं है, ये बहुत एडवांस नॉलेज भी नहीं है. इट इज ए रीजनेबल नॉलेज. The aspirant who is going to have a Farid Jyotish, one of the aspect in the curriculum, must know it. Yes, Okay, next क्या था? Next. sir. Next क्या था? Sir, these many questions I could prepare, like on related to biodata. There can be certain cross questions also, but apart from that, जो शौर्य ने सवाल लिखे तो उसको आपने कुछ किया था यार? yes, sir. That's what I told. Sir told me certain themes. No, I'm repeating the same. You start. What is the first theme he has given? Yes, sir. What is the first theme? Sir, education. चलिए उसी से स्टार्ट करिए. Sir, Explain. firstly, You start your education. You start your education from class 10th. 10th में क्या क्या था? okay. Sir, 10th Hindi, English, Sanskrit, Maths, Science and Social Sciences. चलिए कोई पर्पस नहीं. 12th में क्या था? Sir, Hindi, English, Sanskrit, Political Science and Economics. कोई पर्पस नहीं. आइए अब नेक्स्ट. Sir, graduation law, BA LLB honors. Yes. And next. Sir, post graduation Sanskrit, Phalit Jyotisham. Okay. Sir, PhD under IKS project on that constitutional morality and values thing. Okay. Yes, sir. You Sir, this is for education. सॉरी पहले इसी पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना. जो इनका ग्रेजुएशन था और जो बिकॉज हाई स्कूल इंटर तो सबका कॉमन, कोई खास बात है नहीं. जो इनका ग्रेजुएशन है उसे स्टार्ट करते हैं. तो स्टार्ट. So the first remarkable thing from your progression in educational career is, why did you choose to do law? Yes, sir. So what would be your answer? The real answer, of course. Yes, sir. Sir, I decided administration for my career due to the diversity it can provide me. So I decided to choose law as my graduation so that it can help me in being a better administrator. नहीं बन रहा है. अगेन थिंक. Okay. अगेन और सोचो. Sir, this was the real transport yourself back to when you were in 12th. What had actually propelled you to choose law? Sir, in 2010 only I decided civil services as my career. So then I was interested in reading commerce. And in 2010 you were in 12th? Yes, sir, in 10th. In 10th, you were in 10th. Okay, take a fine, Yes. fine. Sir, in 2010 itself, I decided to pursue civil services as my career because after 12th, we were supposed to choose particular stream in 11th class only. So for that particular purpose, my father took me to people from various professions and I met them and I decided and worked on what my area of interest is. So, according to my interests, I didn't want to pursue doctoring like this MBBS or engineering. And then I wanted to do civil services because I was not able to decide one subject as my favorite subject. So that was the work which can provide me the actual diversity. I can do event management also. I can do work related to culture of our country also. So that's how I pursued the civil services career, and then I decided to pursue law because law can help me in understanding and doing my work properly. Because for an administration, you need to deal with the law, and law could have been like career backup also if at all I wanted to go in that field.
but it can help in administration also. And at that particular time, there used to be two optional. So I decided if I'll be doing law, I'll be getting law as one optional also. Your Now come to answer the is answer. confusing a lot to the board. Sir, I was telling the original answer for now. Let let me frame your answer in this way. When Yes, I was in the 10th class, I was interested in the civil services. When the opportunity came to choose the option, the law is a good option because it was as an option in the civil services. It is yes, also the constitution which are part of the GS. It will yes, help me to prepare the civil services better. Why we are entering the administration? It is one of the other aspect of the answer. yes, sir. Right, sir. I think you should say it this way so that the real answer also gets a representation in your answer. Okay. Yes, sir. I believe you should say that when I was in 12th, then I had already made up my mind that as a career option, I would give my best to get through civil services. Yes, And sir. then when it came for choice of subjects, I went through certain subjects cursorily and summarily. I found law charming. And Okay. then it also occurred to me, sir, that law also opens up another dimension of profession. So Yes, I found it lovely, and I decided to stick with it. right, sir. तो देखो क्या है, 3 पॉइंट आप लिखो. एक पॉइंट नंबर क्या हो गया? लॉ as an optional I can take in the civil services. Second, law may help into the GS because the constitution is the major part of the law. Third, law gives an analysis power because law involves a lot of brainstorming. Fourth, what the Shaw has said, law help us to understand our rights and duties. Next, law makes us aware. And last, it is also a B option for me in a situation where I need to choose some of the profession, it is available to me. Last, knowing the law may help in anywhere, any organization where I will land up. अब Yes, आप अपने आंसर को आप इससे कंपेयर करो. right, sir. Got it? सर कोई पॉइंट छूट गया? सर this one? Covered, sir. Covered. I think almost all important things are covered. Sequence you have already understood. This keep this last. That and then it also had the advantage of opening up a new dimension as a career, and that is why it stayed with me. इसको Yes, आप sir. पॉइंट वाइज देखो, ठीक है ना? व्हेन यू स्पीक आप जो कहते हैं सीक्वेंस है इसी बोलो. लास्ट में ही बोलना कि जो है कि हमारा ये एक ऑप्शन रहेगा, लास्ट का 2 रहेगा. ये हेल्प करता है हमको एडमिनिस्ट्रेशन में. एडमिनिस्ट्रेशन हटा देना. इट हेल्प्स अस टू वर्क बेटर वे बिकॉज लॉ इज रिक्वायर्ड एवरीवेयर. एंड लास्ट बोलना हमको एक ऑप्शन देता है. Yes, sir. नेक्स्ट और क्या है और उसमें? Shivani, there is only one danger. Yes, If you sir. start enumerating like this, Yes, sir. then it turns out it appears as a very well cooked answer. So what you instead do, to my mind, you even though you remember point one, point two, point three, point four, you pretend as if you are thinking and then stating. You Okay, got sir. my point. That's a Right. very important thing. You don't start like this. Okay, sir, one, this was it. Two, this. Make it narrative. Make it conversational. Actually, not even narrative. Conversational. Okay, Yes, sir. sir. I was in 12th standard when I had already made up my mind to go for civil services. And Yes, sir. then I looked upon a few subjects, and somehow I found it very charming. When I started studying law summarily to take a call, then I found that it is very interesting, sir. And it Yes, sir. also, I thought it will also be a good way to learn about how society functions, how state functions, how constitution functions. So it Yes, enriched sir. my knowledge. Then I found that it can be a good optional also, and it will also help me in understanding the general studies. And then finally, sir, I also found it very good in terms of opening up a new dimension as a career.
So that's why in those circumstances, I took the call and decided law as my subject. That's how you say it. क्या होगा Right. ना शिवानी, एक ऐसा आंसर है, इस पे कोई काउंटर क्वेश्चन नहीं बनेगा, बिकॉज इट इज द रियल आंसर. Yes, sir. आप ये आंसर बोल नहीं पा रहे थे, आप आंसर कर रहे थे, लेकिन आंसर ही आपके दिमाग में रहा हुआ कहीं ना कहीं. Yes, जो भी sir. आदमी पॉलिटिकल साइंस लेता है, हिस्ट्री लेता है, लॉ लेता है, तीनों के पास एक ये तर्क होता है कि हमको जीएस पढ़ने को मिल जाता है. हिस्ट्री वाले को Yes. हिस्ट्री का मिल जाता है, लॉ वाले को कॉन्स्टिट्यूशन मिल जाता है, पॉलिटी वाले को इंटरनेशनल रिलेशन, पॉलिटी और मॉडर्न इंडिया मिल जाता है. आंसर ये बहुत अच्छा आंसर है भी. Yes, sir. देखिए, अब आप लिखते जाओ सब, ठीक Yes, है sir. ना. नेक्स्ट. Now you tell me, अगर लॉ के बारे में ग्रेजुएट लेवल का, तो आई एम समहाउ कॉन्फिडेंट, बट इट इज माय ड्यूटी टू कंफर्म फ्रॉम यू Yes, sir. कि ग्रेजुएट लेवल लॉयर से अगर जो बेसिक चीजें, नॉट अ प्रैक्टिसिंग लॉयर, बट Yes, sir. somebody who has had training in theory, I think you are comfortable in answering. Yes, sir. I believe so somehow. Please, मेरे कहने पे, and I already know that would be your strong area, jurisprudence. Right, sir. Jurisprudence and interpretation of statutes. Be thorough with these two aspects. बाकी में सॉरी बोलोगे तो चलेगा, इसमें नहीं Yes. चलेगा. इसमें you should know, Yes, sir. क्योंकि सब interconnected है actually. When you go to schools of law, ना, तो schools Yes, of jurisprudence, I wanted to say, schools of jurisprudence, then actually it is very interconnected with the topic that you have chosen. yes, sir. Constitutional morality and all, they are very, I mean, organically connected, these thoughts. So I Yes, sir. think you should brush up the jurisprudence part. Yes, sir. That will be very good. And then any other aspect of law? Constitution. Yes. Constitution. Constitution, jurisprudence, interpretation of statutes. Three things. Just brush up summarily. Don't go into detail. Yes, sir. शौर क्या है ना, इनको ब्रशअप कर लेने देते हैं. एक दिन हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन पे से डिस्कशन करते हैं, बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. आप बेटा क्या करो, आज आप ब्रशअप कर लो. हम लोग कोशिश करते हैं कल डिस्कशन करने का. संडे को आपका मॉक है, तो टुमारो विल ट्राई टू स्टेट. Yes, sir. Okay. So law is this. Therefore, what questions can be asked? Okay, you have already made clear that I had already started preparing for civil services, so nobody will ask कि फिर आप law करके lawyer क्यों नहीं बने. Nobody will ask. Okay, चल, come Yes, back. sir. Then comes the $1 million question. Why did you choose something else as your post graduation? Yes, sir. Why the shift? Sir, I got a basic idea of law, which was required for my civil services exam, as well as the basic knowledge of law, constitution, etc. But there was my keen interest since childhood in the language Sanskrit. So I decided to delve deeper into the field of Sanskrit and took this at post graduation subject. फिर से बोलो, अगेन रिपीटेड, again try to speak. You speak Sir, as much as possible. Don't be disturbed or perturbed. We are telling to repeat you. It's our common strategy to make you more and more to speak. Yeah. Yes, sir. You have seen some of the video of the Bhavna? Not yet, sir. I'll watch today. Yeah, just watch it. Sure, sir. Yeah, you speak again the same thing. Speak. Sir, my purpose of understanding basic law and basic logics and analytical ability was already fulfilled during my graduation. So until I get the job in civil services sector, I wanted a plan B. And also I was keenly interested in the field of Sanskrit since childhood due to my family background. So I decided to delve deeper into this field during my post graduation. You used the word already fulfilled. Don't use this. Use it has been addressed a bit. Okay, sir. Got it? Yes, sir. Because if you say already fulfilled, then it's doing आप master हो गए हो. Just try to see language part also. It's addressed a bit. आप फिर से बोलो. You again repeat it. So my purpose of doing law graduation was a bit like addressed during my grad only. I got some of the analytical abilities and basic knowledge of law. Then due to my keen interest in Sanskrit and for a plan B, and since childhood I was attached with Sanskrit solely, so I decided to go for a post graduation in this field.
one of the issue will be asked to you that not gone for post graduation in the law and gone to the Sanskrit. Yes, sir. You answer this. Sir, I wanted a career in administration preferably. Till I got that, I didn't want to go for academics. But if at all I want to go for academics, Sanskrit was the childhood love. So I decided to pursue the same. Then they may say your choice of the law after 12th was wrong. No, sir. Actually, through distance mode of education, I have always been studying Sanskrit along with graduation. Also, I was doing some certificate Then courses in why you not prefer the Sanskrit in the graduation level? because I didn't want to miss the opportunity to understand the law constitution. So you are trying to explain that after 12th I wanted to understand the law and constitution. Then after the doing law, I had shifted towards my first love, that is Sanskrit. Yes, sir. कोई इसमें आपको दिख रहा है contradiction in your answer? Sir, a bit contradiction in the language in which I'm answering. Any other contradiction? Yes, sir. Because if Sanskrit, if I'm using the term childhood love as Sanskrit, then why civil services? Yes. It can be Sanskrit solely. So you remove the word childhood love. Yes, sir. Because childhood love is very strong word. Yes, sir. आप बताओ सर. Sir, I think what he should instead say that आपका 12th standard, when you were in 12th standard and you were deciding your career, you had already made up your mind that I'll give my best shot to civil services. One. Now, Yes. at that time, there were two options you were saying? Yes, sir. Or by that time, optionals were reduced to one when you were in 12th? Yes. No, sir. At that time, there were two optionals. One was Sanskrit. Yes, that's why I'm asking. So one thing, you were already clear that your favorite subject is Sanskrit. Yes, sir. You, in any case, you had to have a second optional or not? Yes, sir. So, and then you started, which optional can help me in understanding the social functions better, in understanding constitution better, and then in serving me as a second optional as well. Yes, sir. Stop there. So I reverted to law and kept on enriching my knowledge of Sanskrit also. Yes, sir. After graduation, when I got a chance and I had to pursue a course for post-graduation, I thought this is the opportune time to revive my formal study of Sanskrit again, so that I get stronger at both the subjects institutionally. I think that is a good answer. Yeah. You use it as a strategy that I have gone towards, because I have studied law, understood the law. Second option I have to study, it is in the as per UPSC syllabus. So I have gone to choose another option, that the Sanskrit is my interested part. So childhood love, you try to avoid that word. So it's my interesting portion. I am very keen to learn it. So therefore, I have gone for the Sanskrit. I think it will solve your problem. Yes, sir. And always remember this thing, that while you were doing law, you realized that the course content, the syllabus of the UPSC, the requirement of the syllabus of the UPSC, that will not be fulfilled by your basic understanding of Sanskrit of 12th level. So you had to revive, you did not have any option. Otherwise, it would have been an opportunity cost for you. So that is why once you got comfortable in law as a subject, then you thought that you should institutionally revive the study of Sanskrit so that you can perform at the level of the requirement of the UPSC. Because आपने graduation तो संस्कृत से किया नहीं है. Yes, sir. You got my point? हाँ. Yes, sir. So that's how you decided. Now the only question remains is this: why did you not choose Sanskrit and some other optional? And why didn't you go for a normal graduation or BA honors program? But that will be far-fetched. You say that, it just struck me. When I studied law, then it was fulfilling more than one requirements. And I found that, yes, because I was comfortable in Sanskrit, I thought I would make it up. Yeah. I would make up for the loss and let us study something new, which helps me in general studies, which helps me as a candidate, and which has the potential to help me as an administrator as well. Khatam ka.
Yes, sir. मेरे ख्याल इतने में काम हो जाएगा. What the interview panel is interested to have information or the analysis from the aspirant, a convincing and logical approach. I think you are able to convince and give your logic here. Yes, sir. Next बताओ और क्या है, next क्या है? इसी अब में बताओ. क्वेश्चन आपका आएगा, अब यहाँ पे आप फंसेंगे कि ओके ठीक है संस्कृत से कर लिया, व्हाट हैपेंड टू योर सिविल सर्विसेज ड्रीम देन? यूपीएससी का क्या हुआ आपके? Sir, at that time I couldn't clear prelims, so I took a break to appear in the state civil services firstly and prepare better for UPSC, and I'll appear in upcoming years in UPSC. When you had completed graduation at that time, Yes, sir. तब तो ऑप्शनल थे क्या प्रीलिम्स में, या तब तक निपट चुका था मामला? No, sir. In prelims, optionals were not there in prelims. These were आपने in आपने कब आपने लॉ पूरा कब किया? 2019. हाँ तब तक तो खत्म हो चुका था सर. यस. नहीं सर ये आंसर काम नहीं करेगा तब. सर कौन सा आंसर सर? मैं हाँ, जो हम लोगों ने ये आंसर बना रहे हैं कि हमने इसलिए संस्कृत लिया क्योंकि हमको सिविल सर्विस दूसरा ऑप्शन लेना था. 2013 में दूसरा ऑप्शन हट गया था. यस सर. And she completed the law in 2019. So then she has shifted from the law to the Sanskrit 2019. At that time there is not a second option. तो ये उतना कहते हैं अपीलिंग नहीं होगा तब. But sir, Sir, out of हाँ बोलो पहले तुम बोलो तब मैं out बताता हूँ. out of these two, I decided to pursue Sanskrit literature for some more reasons, because I felt more linked to Sanskrit literature. That was more scoring also, and that has a little syllabus with less current affairs updates. I needed to work deeper on a shorter portion in Exactly. comparison to law. That should have been the basis. हाँ सर, क्या है ना कि ये आंसर जो पहले वाला हम लोग बोल रहे थे कि हमने इसलिए संस्कृत लिया बिकॉज आई हैव टू हैव सेकंड ऑप्शन. द सेकंड ऑप्शन इशू हैज बीन क्लोज डाउन ईयर 2013. नहीं सर, लॉ लिया इन्होंने सेकंड ऑप्शनल के तौर पे सर. संस्कृत तो इनका फर्स्ट ऑप्शनल था ही. ऑलवेज डिसाइडेड था. नहीं ये भी आंसर कन्विंस क्यों नहीं कर पाएगा क्योंकि इन्होंने संस्कृत इंटर के बाद ही छोड़ दिया. यस सर. पढ़ा तो संस्कृत पढ़ा ही नहीं ना. कह रहे हैं कि कॉरेस्पॉन्डेंस से पढ़ती रही हूं मैं. वो बड़ा अपील नहीं करेगा. हमेशा काम, जैसे हमने आपने जो सब्जेक्ट लिया, हम लोग का पहला ऑप्शन वही होता जो हम लोग पढ़ते थे. जैसे आपने बॉटनी लिया तो आपने जो दूसरा ऑप्शन चूज किया, एग्रीकल्चर जो चूज किया, आपका फर्स्ट ऑप्शन थोड़ी था, तो फर्स्ट बॉटनी ही था ना. यस सर. होता है तो बिकॉज़ सर बॉटनी इसलिए था क्योंकि मैं पहले से ही बॉटनी से पीजी कर चुका था. दैट्स व्हाई सर. नहीं क्या, अगर हम लोग प्रैक्टिकल एस्पेक्ट लाइफ का देखें तो जितने लोग सिलेक्ट होते हैं उनका फर्स्ट ऑप्शन वही होता है जो पढ़ते हैं. यस सर. तो अगर ये बोलेंगे नहीं हमारा जो करस्पॉन्डेंस था, मेरा फर्स्ट ऑप्शन था, लॉ सेकंड था, थोड़ा अपील कम कर रहा है ये. सर वो ठीक बात है, लेकिन सर देयर इज अ काउंटर आर्गुमेंट फॉर दैट बिकॉज शी वाज डैम कॉन्फिडेंट अबाउट संस्कृत. दैट इज व्हाई she thought she would manage even with correspondence scores, and she can prove it in the interview panel how good she is at Sanskrit. ये कह सकते हैं. लॉ अपने आप नहीं पढ़ा जा सकता सर. लॉ correspondence में अवेलेबल नहीं है सर. नहीं हम ये कह रहे हैं, ये जो दूसरा आंसर है ज्यादा अपीलिंग होगा कि संस्कृत मैंने इसलिए चूज किया कि क्योंकि इलाहाबाद में संस्कृत लोग बहुत देते, उसका रीजन सिर्फ होता था कि संस्कृत का सिलेबस कंट्रोल्ड है, मार्क्स ज्यादा मिलते हैं और करंट अफेयर्स नहीं होता है. इफ वी सी द चूजिंग, जो इलाहाबाद में संस्कृत चूज करते थे, हमको कहा गया आप संस्कृत ले लो. जब मैं एक लिटरेचर चाहता हूँ तो 3 लिटरेचर में राय दी गई, पाली, संस्कृत, हिंदी. तीनों के बारे में एक ही बात कही गई कि इसका सिलेबस कंट्रोल्ड है, स्कोरिंग है. और इन तीनों में हिंदी सबसे लेस स्कोरिंग था, पाली संस्कृत ज्यादा स्कोरिंग था. विजय कुमार सिंह का जो था ना, जो सब्जेक्ट लिया था संस्कृत, विजय कुमार सिंह, जेके मिश्रा, इन सब का, HK लाल, सबका एक ही लॉजिक था कि रट के मार्क्स संस्कृत में मिल जाता है. तो जो एग्जामिनर के दिमाग में ऑलरेडी स्टैब्लिश है उसको स्टैब्लिश करना ज्यादा आसान है इन कंपैरिजन टू इंजेक्ट द न्यू आइडिया. It is a new idea that my correspondence course is much stronger than my regular course. बताओ आप इस पे. नहीं बेटा तुम्हें कौन से साल में इंटर तुमने पूरा किया है भाई? इंटरमीडिएट सर 2010 में जब 10th किया था उस टाइम पे 2 ऑप्शनल्स होते थे. एंड माय संस्कृत. Don't worry about that. I'm asking when did you complete your 12th? Sir 2012. Okay. At that time there were 2 optional or not? 2 optionals were there or not?
Sir, two optionals Yes, were there when I cleared 12th. ट्वेल्थ के absolutely. बाद आपने क्या किया? Sir, लॉ में एडमिशन ले BLLB लिया, honors. बी ऑनर्स। BLLB BLLB ऑनर्स. honors, sir. तो 5 years integrated course. तो 2017 हो गया, तो 2 साल बीच में गैप कहाँ हुआ है? Sir, 5 years integrated course. तो 12 और 5 17 हुआ ना? Sir, in 2012 I was in 12th, and ठीक in है। 2013 I started my law graduation, which was supposed to be completed in 2018. But due to my bad health, I couldn't appear in one semester exams, so I needed to appear again. So it became 2019. आप इस क्वेश्चन को भी तैयार करो। नहीं, आपका Sir, 2 साल गैप आ रहा है। आपका 12th हुआ 12 में, 13, 14, 15, 16, 17, आपका 17 में लॉ होना चाहिए। Sir, 2013 March में complete हुआ. In 2012 I got admitted in 12th. अच्छा, यू हैव पास 12th इन 2013। Yes, sir. March 2013. अच्छा, ओके, तो 5 साल और हुआ। सिलेबस कब चेंज हुआ Sir, यूपीएससी का? 2013 onwards. Which 2013। month? You have to be thorough. Which month? Sir, I'll check the same. You check it, and coincidence अच्छा बैठ जाए तो अच्छा है कि you had already opted for BLLB honors and there was no going back. या Yes, आप सर ये क्या कर सकती है ना, ये इस सीक्वेंस को अल्टर करें, एक सीक्वेंस ले आवे कि संस्कृत स्कोरिंग है, कंट्रोल्ड है, ये मैं करना चाहती थी। दूसरा ये कह दें कि उस समय हमको दूसरे ऑप्शन के बारे में सोचना था, तब हमने इस बारे में सोच लिया। क्योंकि हल्का सा इश्यू क्या है कि अगर एग्जामिनर इस पे क्रश करे कि आप 2013 में आप जो सोचा, आपने ऑप्शन चेंज हो गया, आपको यही करना था। You just brush up this question knowledge. Again, we'll discuss again on this. Okay. yes, sir. Next. Sir, इसमें hobbies. जो कैच है वो ये है भाई कि when you are doing BLLB honors and in the first year itself you got to know that now this thing has changed, the entire setup has got changed, and there will Yes, be sir. only one optional, isn't it? The second optional has Yes, been dropped. Then yes, obviously for a student who has already invested into a course like BLLB honors, you have invested your commitment into that, then yes, sir. isn't it only proper because you were confident that Sanskrit you can make up, but Yes, LLB sir. you cannot, law you cannot study on your own. So Yes, you sir. have to have institutional help. Okay, for that you entered BLLB honors. Fine. Yes, sir. In the first year itself, you come to know that this is of no use now. I Yes, should sir. have gone into Sanskrit, BA honors Sanskrit, but there is no going back. So you then evaluated your options and found that in any case, law is going to help me in understanding constitution, in other portions of GS. It will only help me, it will not harm me. And when Yes, I sir. complete BLLB honors, then in any case, I will revive my studies of Sanskrit because now only one optional is needed. Yes, sir. Okay, and because one optional is needed and Sanskrit has been my favorite subject, law was taken up as a second subject, and it could not have been done by correspondence, so I had to take an admission there in a proper Yes, course. sir. When I completed and I did not have the limitation of having two optionals anymore, then I switched back. I was already, as you already said, that sir has guided you, that I think I got the benefit of law. It sufficient exposure, and it addressed my my curiosity to a fair and reasonable level. So I switched back to Sanskrit because I knew that because I had done law, so I knew that as if I have to choose a single one between the two, then Sanskrit should be chosen because of the reasons that you enumerated. Yes, sir. Now you Sir, can complete your answer. sir, as a panel member, if anybody is answering this, that he or she has passed 12th in 2013, syllabus has been changed. In 2018, she passed law. Then choosing Sanskrit as an optional for civil services, not convincing much. Because the second option issue has been gone. सर किसी को लॉ करते समय पता चल जाए कि हम किसी लायक नहीं है, लॉ में हमारा कुछ नहीं होगा, तो संस्कृत पे ही जाएगा वापस। नहीं, वो ठीक है, तब ये स्टैंड ले लेना कि हमको संस्कृत में वापस जाना ही है। एग्जैक्टली सर, वही मैं बोल रहा हूं। लेकिन क्या है सवाल भाई, तब आप समय क्यों वेस्ट कर दिया? अंदर काउंटर क्वेश्चन, तो आप समय क्यों वेस्ट कर रहे हो? Why you complete the law when you came to know 13, 14? Law is not your domain. Then why you are not choosing Sanskrit? भाई सवाल पूछने कोई आंसर नहीं है। सर वो तो साल बर्बाद हो जाता ना सर स्टूडेंट का, सर दैट इज द इशू। साल बर्बाद हो जाता सर, और कॉरेस्पॉन्डेंस में संस्कृत मिल रहा था तो इन्होंने कर लिया सर। अब इस सवाल का भी जवाब तैयार करना चाहिए। बोला यस सर,
I found the Sanskrit more suiting to us, but law has its own advantage. I want to pursue the degree and to have it. Yes, sir. और संस्कृत बोला, संस्कृत हमको पढ़ना ही था, तो हम संस्कृत पे आ गए। Yes, पढ़ते sir. रहे, लेकिन आप ही नहीं गए, पढ़ते रहे, यू हैव टू से। पढ़ते रहे, तो आप इस तरह से उसको जो क्या ना कि जब भी कोई क्वेश्चन बनाओ, हमेशा जो इंटरव्यू मार्क्स है अच्छे मिलते हैं आपके काउंटर क्वेश्चन के आंसर करने पे। तो Yes, these sir. are the questions are going to start with you. Try to आप क्या ना कि बेटा आप खुद ही अपने सवाल करो, जो आप Right, sir. संवाद होता है ना, उससे बेहतर कोई आंसर लाइफ में होता नहीं है। तो आप Yes, अपने से संवाद करो, ये सवाल आ रहा है, ये सवाल आ रहा है, देन यू टेक टू हेल्प फ्रॉम सवाल का आंसर क्या होगा, तो जो सवाल का आंसर क्या आ रहा है। I Yes, entered sir. in 2013 in the law. Sanskrit I always interested to study. During the course of law, I thought that I will take Sanskrit as an option, but I have completed the law because law has so many advantages. जो आपको मैंने अभी गिराया है। Then I have done the Sanskrit. I want to have knowledge of Sanskrit, and I have a lot of interest in the Sanskrit. When you are seeing a lot in the Sanskrit, then you have another responsibility that your knowledge of Sanskrit need to be very good. Because Yes, you yourself is giving assertion there, commitment there. Yeah, I know a yes, lot of Sanskrit. जैसे आपका जो फलित ज्योतिष का बताया, मोस्ट लाइकली यू आर नॉट अवेयर, ठीक है ना, लेकिन एग्जामिनर को ये जानना चाहिए। ये किताब बेसिक किताब में है, रोमिला थापर की किताब से ही हमने निकाला इसको। yes, यस, sir. नेक्स्ट Sir, PhD? यस, देयर विल बी अ क्वेश्चन। कम पीएचडी। अच्छा, तो प्रीलिम्स नहीं क्लियर कर पाए, कितने अटेम्प्ट दिए आपने? Sir, 3। I gave 3 at that time. इनका All प्रीलिम्स का मार्क्स भी अच्छा नहीं है, 80 के आसपास ही पहुंच पाएंगे ये। Therefore, if she is going to apply in the civil services, her prelims need to be improved a lot. ऐसा करो शिवानी, आप इंटरव्यू दे लो, हम लोग हर संडे मॉक टेस्ट कराते हैं प्रीलिम्स का। You appear 1 or 2 mock tests, let me see आप क्या परफॉर्म कर रहे हो उसमें। Yes, You sir. are planning to appear in the civil service 2024? Yes, sir. या कोई आपने मॉक टेस्ट दिया था कभी प्रीलिम्स के लिए? Not yet, sir. तब कैसे होगा, नहीं हो सकता है आपको। और उसके बाद आपका स्कोर कितना आया है बेटा? 80। सर तो काफी मेहनत है सर, अगर अपने बल पे ही कर रही है तो सर दिस इज ब्रिलियंट। आई विल से नॉट वेरी स्मार्ट बट स्टिल ब्रिलियंट। दिस इज नॉट स्मार्ट, यू आर, आई मीन यू कैन नॉट वेस्ट योर अटेम्प्ट्स just by self study. You need institutional help for this exam, as sir is rightly guiding us. तो वो तो जरूरी है बेटा, मेंटरशिप के बिना नहीं हो पाता ये एग्जाम। दिस हैज चेंज्ड द लीग कंप्लीटली। सर ऑलवेज सेज कि अब ये एग्जाम सेल्फ स्टडी का नहीं रह गया। नहीं पता, कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं मिला है जो खुद पढ़ के हो जाए। यू नीड द सपोर्ट। आप देखो ना, आप इंटरव्यू दे रहे हो ना, यू सी द फ्लॉ। Yes, अगर आप sir. हमारे पास नहीं आए होते, आपको कुछ पता ही नहीं चलता। आप वही आंसर दे के आते जो आप बोल रहे हो, सारे आंसर आप रिएक्शन की तरफ लेके जाते हो। Yes, sir. You have not your shortcoming is not the knowledge. Your shortcoming is the presentation. Your shortcoming is the analysis of the reservoir which you are having. आपके ही आंसर को हम लोग बेहतर कर रहे हैं, उसी को शार्पन कर। बात आप कह लेते हो, लेकिन बात को आप पर्सपेक्टिव नहीं ले आ पाते हो, बात को आप सीक्वेंसिंग नहीं कर पाते हो, बात को जैसे आप बहुत फास्ट बोल रहे हो। आपको स्ट्राइक ही नहीं किया था कि माई पेस इज फास्ट। आज मैं वो नोट करा देता हूँ, आपका जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ ऑडियो, आप खुद देखना। या कम नेक्स्ट। Yes, suppose you are asked, okay, so you did not see a very strong prospect at that point of time in the prelims examination. You are finding it very hard. So Yes, you sir. then was that the reason why you started pursuing PhD or what? Yes, sir. I wanted a plan B also. So for academics, I needed to pursue PhD. सर देखिए, इनके पास क्या है, प्रॉब्लम क्या है। She is expressing in front of the board a lot plan B. One plan B which we have just discussed about the law. Right, sir. Second plan B, she is saying that I have plan B for the academics.
To say so many plan B to the board is not very fair. Not very fair, but not very good, I would say. Yes, sir. बताओ, आप बताओ. बिल्कुल सर, बिल्कुल मैं भी एग्री करता हूँ. यू डोंट यूज दैट प्लान बी. आपने इससे पहले कहाँ यूज किया था? लॉ वाले में जो लॉ का आंसर प्लान बी देयर, यूज इट ओनली वंस एंड दैट इज एट दिस स्टेज. और मेरे हिसाब से लॉ का प्लान बी इस संस्कृत के प्लान बी से बेटर प्लान बी है. क्यों 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 बेटर प्लान बी है? उसका रीजन ये है कि लॉ आपके संस्कृत के प्लान बी में आपको किसी एजेंसी के हाथ काम करना पड़े. क्यों? आपको लेक्चरशिप मिलेगी तब तो प्लान बी काम करेगा आपका. लॉ में क्या है? यू डोंट नीड एनीवन. यू कैन स्टार्ट योर कंसल्टेंसी, योर प्रैक्टिस ऑन योर ओन. If you compare the two plan B, one plan B is dependent to certain institution or agency which gives you the job. You may fail to the civil services, you fail the state services. Yes, sir. But the plan B of the law doesn't need anyone. It go ahead only as per caliber. आपका caliber आप आगे जाओगे नहीं जाओगे. So as per my opinion, the plan B of the law is better than plan B of the Sanskrit. आप बताओ सर, आपका क्या व्यू पॉइंट है? यस सर, मतलब ऑफ द रिकॉर्ड जो हम डिस्कस कर रहे हैं, एज अ करियर ऑप्शन लॉ इज अ बेटर प्लान बी, बट व्हेन यू से इट बिफोर द बोर्ड, देन यूज प्लान बी ओनली वंस इन द एंटायर इंटरव्यू, एंड दैट इज नाउ फॉर पीएचडी, फॉर नथिंग एल्स. देखो ऐसा हम लोग क्यों समझा रहे हैं? हैविंग सो मेनी प्लान बी एक्सप्रेस योर लेस कॉन्फिडेंस इन द पर्सनैलिटी. वाई वी वॉन्ट टू, क्या जो भाई बोलते हैं ना ये बच्चा हम सेलेक्ट नहीं करें पर कॉन्फिडेंस नहीं, इसके पास एरोगेंस है, ऐसा नहीं. आप वहां पे कुछ शो करते हो, आपके आंसर से लग जाता है. इफ यू आर शोइंग सो मेनी प्लान बी, ना इस पास न तो कॉन्फिडेंस अपने लॉ में है, न कॉन्फिडेंस सिविल सर्विसेज में है. देयरफॉर दिस कैंडिडेट हैज अ लेस कॉन्फिडेंस और लैकिंग कॉन्फिडेंस. That's why use plan B only once, and once a plan B is accepted one, because it's human life है ना. Yeah, next. हाँ सर, next क्या था? Sir, PhD under IKS, something What is related. IKS? What is Sir, IKS? Indian Knowledge Systems. Okay. What is a PhD in IKS? Sir, like under IKS project, we are working on a particular areas concerning IKS for which we get scholarships. Like I'm doing I'm doing a multidisciplinary research on constitutional morality as well as ancient Indian value system. So it's a multidisciplinary topic which falls under IKS scheme. Slow down. बहुत फास्ट है बेटा. You take lot care on this. Sorry, ये भावना से भी फास्ट है ये. Yes sir. फास्ट है ये. भावना को हम लोगों को स्लो डाउन कराने में बहुत समय लगा, 2-3 महीने लग गए तो स्लो डाउन. 3 months, at least 3 months sir. अनफॉर्चुनेटली आप थोड़ा सा लेट आए, खैर नहीं जो टाइम है, बट अगर आप जो क्या है आपका सिलेक्शन होगा 100% होगा, 100% होगा, और इसी एग्जाम नहीं रहोगे, यू गो इन द बेटर एग्जाम आल्सो. जस्ट आफ्टर दिस एग्जाम यू वर्क विथ अस फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ द टाइम. यस, फिर से बोलो, यही आप फिर से बोलो, लो कहते हैं स्लो पेस पे, सेम चीज बोलो. Sir, I don't want to change your content. I want to just change your pace. Okay, sir. Sir, Indian I will demonstrate for you, okay? Okay. आप बोलिए sentence, let me write it down and then I will say it. It will help you. Yes, sir. Right, sir. Sir, Indian Knowledge Systems project of Government of India is focusing on reviving our ancient sciences and ancient culture in terms of its modern relevance. So under that particular project, we are our university is promoting research areas also concerning modern as well as ancient sciences or modern and ancient fields. So I have taken this multidisciplinary research topic under IKS project. All three different points you have touched upon, if I heard you correctly. One, what is Indian knowledge system from the perspective of the government, of a government scheme. Second, that your institution has taken up as a participant or as a partner in this particular vision of the government. And third, that's why you have undertaken a multidisciplinary research in this particular project. Three things you have spoken. Now, सब एक जैसा है.
there is no tonality in this. It is a difficult thing to do in 5-6 days, but you have to give a tonality shape to the entire structure of the answer. Okay, you start like this, sir. There is an element of novelty in this or not? इंडियन नॉलेज सिस्टम जो आप बोल रहे हैं इसमें एलिमेंट ऑफ नॉवेल्टी है कि नहीं? ऐसा पहले कभी थोड़ा हुआ है. दिस इज अ नोवेल प्रोजेक्ट. So that novelty has to come in your voice, in your tonality. You say it like that, sir. That the Indian knowledge system is a wonderful initiative of the government in which they are trying to revive the Indian knowledge system that used to exist in our ancient times and Vedic times. One second. And sir, as a part of this project, our institution also got an opportunity to partner the government of India in this. And fortunately, sir, I was chosen for this particular. I applied for it, and I was chosen for this particular program for a multidisciplinary research on that topic, sir. तीन बहुत डिफरेंस है. टाइम लो, कॉन्वर्सेशनल बनाओ, बातचीत होने दो. Do not dump it. Do not dump it and then get rid of it. आराम से बात करो बेटा. हम जानते हैं ये प्रॉब्लम जो है वो इनहेरेंट होती है. आई हैव बीन अ विक्टिम ऑफ दिस प्रॉब्लम. बहुत तेज बोलने का मुझे आदत था, बहुत मुश्किल से धीरे धीरे, बिकॉज आई वॉज रिक्वायर्ड टू टीच अ लॉट 5-7 years रिसेंटली. देन आई फोर्स्ड माई सेल्फ टू स्लो डाउन बिकॉज नहीं समझ में आता था बच्चों को. सो आई अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम, बट आई ऑल्सो हैव फेथ इन योर विल दैट यू कैन डू इट by way of conscious reminding. Slow it down always. It will help. सौर ने कहा, उसी को मैं थोड़ा और कंसाइज करता हूँ. इंडियन नॉलेज सिस्टम is a government initiative which is working to revive the Indian traditions, culture, and the Vedic thoughts and philosophy. Yes, sir. आप इसको क्या रहे? बेसिक क्या है? What the struggle we have with you? The struggle is that we wanted your answer need to be strike fast. Yes, To sir. strike any answer fast, you need to be precise or need to be slow. Right, sir. The moment we lose it, impact will be gone. तो बहुत सिंपल है. आप देखो ना, इसको आप और सिंपल करो. इंडियन जो नॉलेज सिस्टम है एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है. इस गवर्नमेंट के इनिशिएटिव का पर्पस क्या है? हमारा जो इंडियन फिलॉसफी है, कल्चर है, हेरिटेज है, उसको रिवाइव किया जाए. Yes, sir. अब इसी को क्या हो रहा है? इंडियन नॉलेज सिस्टम इज एन इनिशिएटिव which is working for revival of Indian culture, heritage, and philosophy. Right. हमने सौर ने एक ही चीज कही है, कोई फर्क नहीं कहा है. सौर का क्या है? थोड़ा सा उन्होंने उसको विस्तार किया, हमने उसको और प्रिसाइज किया. अब आप बोलो. Sir, Indian knowledge system is the Indian government initiative to revive the ancient sciences, culture, traditions, and Vedic knowledge in terms of modern relevance. And through an interview, I got selected for this particular project, and I started my multidisciplinary research in this field. क्या बढ़िया. अब बहुत अच्छा. पर अब जो थ्रू इंटरव्यू हटा दो. I was selected. There is no need to explain how I was selected. Okay, sir. अब आप इस पे थ्रू इंटरव्यू हटा बोलो. Yes, sir. अब पूछा जाएगा बेटा कि what is your vision? What was your vision at that time by doing PhD? Then what? What next did you think? Okay. Sir, I'll decided that I'll keep preparing for civil services, and while in my PhD also, I wanted to do a good research as well as I appeared for the academics interview also, so that I get a particular job and be financially secure. आप ऐसा करो, थ्रू सिविल सर्विसेज हटाओ, कोई पर्पस नहीं बार बार रिपीट करने का. आप जब इंडियन नॉलेज सिस्टम पे बात किया जा रहा है, आप उसी पे बात करो. ओके सर. ऐसा न लग जाए कि आप सिविल सर्विसेज से इतने ऑफिस आप कुछ करना नहीं चाहते हो. ओके सर. उन्होंने सवाल किया था शौर सर का कि आपका विजन क्या है, यही सवाल था ना. यस सर. फिर आंसर करो. ओके. Sir, after starting my multidisciplinary research under IKS project, my particular vision was that I do something good
and do something relevant and trace our ancient sciences so that it can become important, and something water dividing thing can be searched through my research to help our society in future. इसी को आप फिर से बोलो, जो ठीक हो गया, काफी ठीक हो गया, यू अगेन ट्राई, सेम यू ट्राई अगेन ट्राई। Sir, after I तो एक मिनट, started my जहां जहां आईकेएस मत बोलो, इंडियन नॉलेज सिस्टम बोलो, डोंट से आईकेएस। तो क्या है, okay, एक स्ट्रेटजी इंटरव्यू में कि जब अपने मन का सवाल आ जाए उसमें टाइम इन्वेस्ट करने का, टाइम डिवोट करने का, उसको ज्यादा सवाल नहीं पूछने देने का। अगर आपके मन का 3 सवाल ही हो जाए, काम हो जाए। तो अगर आईकेएस बोलना, बोलो इंडियन नॉलेज सिस्टम, हो सकता है आईकेएस उसमें स्ट्राइक न करे। ट्राई टू गिव मोर कंफर्ट टू द एग्जामिनर। अगेन स्टार्ट। yes sir. Sir, after I started my multidisciplinary research, हाँ, फिर से स्टार्ट। Sir, after I started my multidisciplinary research under Indian Knowledge Systems project, my particular vision was that I can somehow become helpful through some dedicated work in my research, that the mission of this particular project gets fulfilled. वेरी गुड, वेरी गुड। इसमें आप ऐड कर सकते हो जो आपका इंडियन कल्चर, हेरिटेज, फिलॉसफी, ट्रेडिशंस, आप ही 4 वर्ड इन प्लेस ऑफ सेइंग कि हम वेदा रिवाइव कर रहे हैं, ऋग्वेदा कर रहे हैं, जो कि सब में यही है सारा। जो अगर आप देखें इंडियन नॉलेज सिस्टम या प्रेजेंट गवर्नमेंट का सारा जो काम है, क्या बोलता है, जो इंडियन ट्रेडिशन है, हेरिटेज है, कल्चर है, फिलॉसफी है, आप रिलीजन शब्द को हटाना, वो मत डालना। Yes, ओके, sir. आप यही 4 शब्द बोलो, आप इन 4 शब्दों को ऐड करके फिर से बोलो। Okay, sir. Sir, while doing this multidisciplinary research under Indian Knowledge Systems project, I had this vision in my mind that I can somehow, through my research, become helpful in fulfilling our mission of reviving our ancient Indian philosophy, culture, heritage, and traditions. हो गया ठीक? हो सर, हो गया क्या, और कुछ चेंज कराना है? ठीक है सर, आई थिंक कि इतना शी हैज स्टार्टेड विद सच अ प्रीडोमिनेंट and front heavy idea of civil services, and then you suddenly seem to be completely divorced with this idea at your organic level also. That is somehow not making sense. I know that they are not going after you this deep, but why not be prepared instead of being sorry at that point of time? So I think it will make a good addition and amendment to say that since I had decided to take a break from Yes, civil services preparation, that will be a better thing to say, I think. yes, Since, sir. sir, I thought that in those circumstances, I thought I will take a brief break from civil services. And after that, I had the vision that I should make use of this time and not sit idle, but make use of this time, make use of my research aptitude to add to the repository of knowledge or finding of my country. And I chanced upon this opportunity and I took it in the first go itself. ऐसा कुछ बोलेंगे तो आई थिंक इट विल बी बेटर, क्योंकि एकदम सर ये सन्नाटे बताओ, में बैकग्राउंड में चला गया तुम्हारा सिविल सर्विसेज, तो पता नहीं कहाँ चला गया। तो सर ये बताओ, सिविल सर्विसेज से ब्रेक कहना जरूरी है, उसको अवॉइड किया जाए? सर मुझे लगता है इनएविटेबली वो पूछ लेंगे सर, और फिर ये बोलेंगे कि हम तो अगर फिर जो है अगर अगर उसको हाँ, काउंटर क्वेश्चन में आने दे तो नेक्स्ट हाँ क्वेश्चन आने में। दे सर, आने देंगे तो उसमें एक यही है, इसीलिए रन कर रहे थे सर कि ये क्वेश्चन रन हो जाए। आप यस उसमें यस फिर यस, बोलेंगे कि मैं करती रही तैयारी, आप बोली भी थी अभी, यू जस्ट सेड दैट आई केप्ट स्टडीइंग दिस, दैट इज नॉट एन ऑनेस्ट रिसर्चर। If I am in the panel, I will be very disappointed that you are doing PhD also and civil services also. You will not score brownie points with me, at least. I'll be very disappointed to the extent of saying that I'll be annoyed. That is it a scholarship program? Yes, sir. All the more angry I would be that you are wasting money of the government and this country, and then you are doing your personal civil services preparation. Easily, I want you to be prepared. That's why I am saying this. I do not rate it very good. कि आप सर स्कॉलरशिप पे सिविल सर सर्विसेज की तैयारी सर, करें। दैट्स व्हाई आई टोल्ड हर कि आप सिविल सर्विसेज को बाहर करो उससे, बिकॉज अगर आप सिविल सर्विसेज से इसको जोड़ोगे तो जो आपका रिसर्च प्रोजेक्ट है वो आपको हैम्पर कर रहा है। तो सिविल सर्विसेज को आई डोंट वांट टू से कि मैं इसको इसलिए पढ़ रही थी, ये मुझे सिविल सर्विसेज में हेल्प करेगा। इफ यू सी यू स्टार्टेड विद सिविल सर्विसेज, देन आई सेड नो, यू रिमूव सिविल सर्विसेज फ्रॉम हियर।
नाउ व्हाट सर इज एडवाइजिंग कि आप ये बोलो कि मैं सिविल सर्विसेज से ब्रेक ले रही थी, तो आप इसको इस तरह से कह सकते हो कि सर आई वांट टू वर्क ऑन माय विजन और माय मिशन इज टू वर्क फॉर दिस जो आपने आंसर किया है, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग दिस। अगर आप सिविल सर्विस, अब नाउ देयर इज वन क्वेश्चन व्हिच सर वांट्स टू रन हियर कि हम सिविल सर्विसेज से ऐड करें या ना करें। तो एक एक चॉइस क्या है कि आप बोल दो आई कि यू अपफ्रंट से दैट आई एम टेकिंग ब्रेक फ्रॉम द सिविल सर्विसेज। सेकेंड, पहली बात तो सिविल सर्विसेज को अटैच नहीं करने का, ये तो डिसीजन है हो चुका है। नाउ यू से अपफ्रंट और यू वेट फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। Sir, how can I justify this break? Because I'm appearing for the civil services interview only, and I have given mains and prelims during this PhD thing. Then how come break Yes, is yes, justified here? yes. This is the issue. Why not? I do not see any problem with that. By with the fixed state of mind, fixed frame of mind, your strategy is not working jolly well. You take a break. There is no doubt about it. In fact, you have taken a break, even if you do not The, acknowledge the it. That is answer a is break. that you have already taken a break from the civil services. Gujarat PCS is a little easier exam than civil services, but I have just appeared in this examination. Okay, sir. You already have taken the break. Right, sir. This is the part of your strategy, na? That before you attack the elephant, you start Yes, from sir. small animals, na? Bhai? That's how you don't Yes, say sir. that it is a small animal. सॉरी आंसर कन्विंसिंग भी है कि हमने गुजरात पीसीएस दे दिया, क्योंकि पीसीएस आई में बहुत ह्यूज डिफरेंस है। आई हैव appeared in this examination and I got the opportunity to appear in सर उसमें सर एक पैनल का ईगो हर्ट करने का एक रिस्क है सर. I somehow feel fearful about it. Rating this, but the exam that you are appearing for, you should not undermine the authority or the grace of that exam vis-a-vis any other exam. What you say that this is a part of my strategy. I have revised my strategy that I will go for state services first, without saying that. Of course, जो सर बोल रहे हैं उसको काटा थोड़ा जा सकता है. That's a reality. There is a difference in difficulty level and all. But don't say it. I mean, if you mention it this way, it will automatically imply it without hurting Now, anybody. You say, I thought कि छोटे छोटे baby steps मैं लेने का सोचा फिर, and then I thought कि I will get exposure of the state services first. Perhaps this will refine my strategy and understanding about competitive exams. Yes, sir. now And if they cross question on this, I can also add that there is no attempt limit, so I can practice through state civil यही बस कहने services. जा रहा था मैं, that rather than difficulty level, you say that it offers me a larger scope, that I can refine myself. I can and if in the process I get selected, nothing like that. I would have fulfilled my dream anyways. Yes, sir. Do not say कि मेरा प्रैक्टिस ग्राउंड है, नहीं तो वो उनके मन में ये बैठ गया कि इसका सीट चला भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है, इसको तो फाइनली तो आईएएस में ही जाने का मन है ना, यहाँ तो वैसे Yes. भी नहीं रुकेगी तो किसी गरीब दूसरे को दे देते हैं सीट. That's very tricky. It's not that easy. So do Yes. not give any such impression that it is just a practice ground for you like that. वो भी इससे भी बचना है. तो बहुत बैलेंस आंसर कि I thought I took a break. जब आपको कॉर्नर करे तब फर्स्ट इंस्टेंस में ब्रेक मत बोलिए. So I took a break for re-strategizing, and I thought that I would take baby steps and try my career in state services, and then re-evaluate my options. Stop there. Right, sir. कोई कमिटमेंट नहीं, कोई कमिटल आंसर नहीं दीजिए आप. Yes, sir. चलिए नेक्स्ट आइए. ये लाइन जरूर बोल देना बेटा. Yes, sir. If in the process I get selected by God's grace, then anyways I would have fulfilled my dream. I would be at my dream career. Okay, sir. ये जरूर बोलना. ये नहीं बोलना कि जो है अभी यहाँ कर भी लोगे सेलेक्ट तो भी हम अल्टीमेटली तो यूपीएससी के लिए जाएंगे. Everybody knows it, but don't say it. Yes, sir. नेक्स्ट बताओ. Sir, hobbies. नॉलेज सिस्टम में आपको अगर छील दिया जाए, suppose we take 5-10 minutes on this Indian knowledge system. What do you understand by this Indian knowledge system? पहले इसको कर लेते हैं. Okay, sir. So in Indian knowledge systems, we have certain portions of ancient chemistry. Like we are just comparing some modern subjects and the ancient subjects like chemistry, modern chemistry, and Rasa Shastra in earlier texts. Then physics in modern and earlier texts. Same goes for mathematics and Vedic Ganit and other types of like Ganit Siddhant in Jyotish texts also.
Then we are trying to see if we have ancient and modern astronomy. We are having allopathy and Ayurveda, and we are working on like each modern field and each ancient field is a part of IKS. All right, very well. And फिर मुझे लगता है कि you should also be prepared for some notable achievements or accomplishments of our ancients. You should be prepared for that. So, Yes. how do you see? Say, I ask you three important contributions of Vedic period or ancient period to the world. Okay. Sir, we had the Shalya Chikitsa in Shulba Sutra also. We have medicines in Charaka Samhita by Charaka. We give zero also. What Sulva Sutra is not about Shalichikitsa, na? It's about the geometry of altars, isn't it? Or have I read it wrong? Sulva Sutra. Sulva means dhaga, na? Thread. Yes. And Am I sir, right? surgery is also done through that, no? No, the Earlier time. Sulva Sutra is the geometry of altars. If maybe I got confused. Shalya Sir, Chikitsa in itself is a discipline, isn't it? Or is it mentioned in Sulva Sutra itself? You will sir, be a I better. have read it. Like the Okay. surgery was done in geometrical patterns with the thread, but I'll check the same, sir. You I check may it, be just check wrong. it, because it is confusing me. So better to be safe and sure. Yes, sir. Okay, that is one. And Sir, two. Zero and Pi by Aryabhatta Hmm. and this Charak Samhita, Medicines by Charaka, and wonderful Sanskrit grammar by But Panini, which did is I very much ask three scientific. contribution in mathematics? Or Okay. I think I asked three contribution in mathematics. Sir, okay, was that the question? Then, sir, No zero. problem, no problem. Yes. Sir, zero pi by Aryabhatta, and astronomical calculations were also given in Surya Siddhanta by him. Okay. Have you heard about Fibonacci series? No, sir. Okay. Okay, fine. ठीक है. Three contributions in sir. सर आप तीन चीज देखो देखो तीन चीज आर्यभट्ट ने जो पाई की गणना की जो 3.14 था और जो सौर वर्ष है जो 365.356 है, यह दोनों जो है जब आर्यभट्ट ने की और जो बाद में मिली दोनों ऑलमोस्ट इक्वल थी। Okay. दूसरा, पृथ्वी गोल है, अपनी धुरी एक्सिस पे घूमती है Yes, sir. और इसकी छाया चंद्रमा पे पड़ने से चंद्र ग्रहण होता है। Okay, sir. ये जो महत्वपूर्ण चीजें हैं ये आर्यभट्ट नहीं कर दी थी। जीरो आप क्या ना, जैसे गणित, देखिए आपने गणित के बारे में पूछा, अगर आपने ये चार चीज नहीं बताई, योर नॉलेज इज वीक। द रीजन बीइंग जो द इंडियन नॉलेज सिस्टम विच यू आर वर्किंग is doing a lot research on this issue. Okay, sir. And it has been established beyond doubt that the 365 days, the value of pi and the eclipse has been invented or discovered by India. ये आपने क्यों नहीं तैयार किया बेटा इसको? Yes, sir. Actually, I was working on one aspect of IKS, not the whole IKS projects, but I'll revise Basic all the understanding you parts should of have. it. Some 10-12 Yes. good contributions which are discussed. और ये सर एस्ट्रोनॉमी एक्चुअली हो जाएगा, तो मैथमेटिक्स के प्योर 3 एग्जांपल्स रखिए, एस्ट्रोनॉमी के प्योर 3 एग्जांपल्स। सर ये मैथ्स ही है, पाई की जो वैल्यू है मैथ्स है, सिर्फ पाई वाला है सर, बाकी जो ये छाया पढ़ने ये तो एस्ट्रोनॉमी में चले गए सर। ये हाँ ये सोमिया यस, और जो कहते हैं जो 365 डेज है ये भी मैथ्स है, ये तो मैथ्स ही हुआ ना ये दोनों तो। और ये जो जब हम लोग को पढ़ाया जाता है ये मैथ्स के कंट्रीब्यूशन में ही पढ़ाया जाता है। बिकॉज आपने एल बासन की किताब पढ़ी नहीं बेटा। No, मैं उस sir. किताब को मैं क्या कहता हूँ, जो रेलिवेंट पॉइंट है मैं आज उसमें डाल देता हूँ चैट पे ही, आप उसको पढ़ लो। एल बासन की किताब से हमने सीखा, हमने आई हैव नॉट डन एनी रिसर्च लाइक यू। तो एल बासन की किताब में मैथ्स, फिजिक्स, साइंस सबका अलग अलग डिस्क्रिप्शन 2-2 पेजेस का, मैं भी अभी डाल दूंगा उसको। यस सर। तो देखो बेटा, मैथमेटिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो कंट्रीब्यूशन मुझे जो ध्यान आ रहा है, दैट इज other than what sir has already pointed out, value of pi and this that most important contributions are: one, Fibonacci series,
which is named after Fibonacci in Italy, but he also gives the credit to Hemchandra only. Okay, this is called Meru Prastar, that is called. You should study that. बहुत ज़्यादा debate होता है इस पे, इसलिए anybody who understands IKS should know this. Number one. Number two, mathematics में this algebra is ours, and integral calculus is ours. It's now almost proven. So all the these things, the credits which are given to Newton and all, now there is evidence that it was already there here. And sine tables, sine, you understand? Sine theta, cos theta. Have you heard about that? Yes, sir. Sine tables of trigonometry, they are also the contribution of India. तो ये बेसिक 3-4 जान लेंगे तो अच्छा रहेगा, बहुत इनका बहुत यूज होगा. अब शिवानी आप लिख लो, 4-5 पॉइंट है. और डेसिमल सिस्टम तो भूलने ही मत भाई, डेसिमल सिस्टम कैसे भूल सकते हो? शिवानी 5 पॉइंट है. Clear conception of the abstract number, which is distinct from the numerical quality of the object or spiral extension. Number 2, simple numerical notations, rudimentary algebra, system of 9 digits and 0. Yes. एक और है, 1 minute. Decimal system is also System of extracting square and cube roots. Value of pi, and the value, आप जरूर ऐड करना कि the value of pi much more accurate than that of the Greeks. इसको जरूर बोलना आप. Spherical geometry, calculus, mathematical implications of zero, infinity, negative numbers. These are the some of the important. तो अब आप लिखो ब्रह्मगुप्त. अब इसमें कौन कौन थे? आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, महावीरा, भास्करा. भास्करा का कॉन्ट्रीब्यूशन, आर्यभट्ट का कॉन्ट्रीब्यूशन है पाई में, ट्रिग्नोमेट्री में, स्फेरिकल ज्योमेट्री में, कैलकुलस में, एस्ट्रोनॉमी में. और भास्करा ने खोजा था इंफिनिटी. कुछ छूटा सा और सब हो गया? Good enough, sir. हाँ, For giving an answer, good enough. एस्ट्रोनॉमी में बताइए, सर ने 2 बता ही दिया था, 2-3 और आप पढ़ लीजिएगा. एस्ट्रोनॉमी में इंडिया कॉन्ट्रीब्यूशंस, यू शुड नो. ओके, ये जितने भी अभी चल रहे हैं प्लेनेटरी, जितने भी प्लेनेटरी सिस्टम है हमारा, उनका जो साइज यानी उनका डायमीटर ऑफ द प्लैनेट्स देमसेल्व्स, नंबर 1. नंबर 2, देयर पीरियोडिसिटी, ठीक है, जितना उनको रिवोल्यूशन टाइम एंड डिस्टेंस, that was all given by our seers. That is already there. कुंभ का मेला तो आप जानते ही होंगे, महाकुंभ. Yes, sir. Thousands of years it is going on. Yes. And it corresponds to the periodicity of Jupiter. एक चीज और आप और क्या करना, जो मलमास पड़ता है, जो 2 आषाढ़ पड़ता है, अभी हाल में पड़ा है, अब गुजरात में बहुत मनाया गया है. इसका संबंध है लूनर डेज से. मैं ये भी आपको भी पोस्ट कर दूंगा. स्मॉल 4 लाइन का नोट. लीप मंथ है, लूनर मंथ है, लूनर डेज है. 29, 28 कैसे होता है? क्योंकि गुजरात में जो दूसरा सावन है बहुत मनाया गया है. तो बहुत पूछ सकते हैं ऐसा क्यों हो रहा है. The basic is like this.
most of the calendars of that time, so-called Greek calendars and English calendars and all, they were solar only, which is wrong, which is inaccurate, grossly inaccurate. Some calendars then became lunar only, such as Mohammedan calendars. They are lunar only. You see the date of Eid that shifts upwards every year. Yes. That's what happens, Ramzan and Eid. Indian calendar is the only calendar system till date which is lunisolar. Okay. What does it mean? That normally it will be lunar calendar, but after a particular period, when the difference between lunar and solar counting is about a month, then that month is added, and that is called Adhik Mas. So once again, it becomes up to date. So this is something that is our contribution. It was nowhere else. Okay, sir. ये सब सवाल का आप आंसर दे ले जाओगे ना, आपका सिलेक्शन श्योर शॉट है, क्योंकि आपका ऐसा टॉपिक है, इन सब सवालों के बारे में पूछने की संभावनाएं अच्छी खासी हैं. Yes, sir. Precession of Earth, you write it down. We were the first to talk about precession of Earth. Precession. Precession of Earth. 27,500 years is the periodicity. इसके बारे में पढ़ लीजिएगा. आज के लिए इतना बहुत है, नहीं क्या ज्यादा बॉम्बार्डिंग हो जाएगी. ठीक है शिवानी, इसको बेटा तैयार करो, हम लोग कल फिर मिलते हैं, और संडे को आपका मॉक जो है हम लोग करने की कोशिश करते हैं. Right. हाँ, विल टेक योर क्लासेस टिल योर, आपका 21 को है ना, 19 तक क्लास देंगे, 20 को आपको हम फ्री कर देंगे. Okay, sir. मोस्ट लाइकली यू आर गोइंग टू बी सिलेक्टेड. जो मेरे बेटा. Yes. Thank you, sir. सर कल 11 बजे है उनका एपीओ वालों का, ठीक है ना सर. और पीसीएस कहते हैं, बिहार पीसीएस का भी आ गया रिजल्ट आज. ओके सर. तो अपनी लाइफ बहुत टफ होने वाली है. सर आप तो सौभाग्य की बात है सर कि किसी काम बट वी आर एंजॉयिंग इट. क्या अच्छा लग रहा है. और अगर शिवानी आपका होगा, आई एम वेरी हैप्पी शिवानी, यू अपोज्ड अस. Okay. मैं हमेशा बोलता हूँ कि एस्पायरेंट की हम मदद करते हैं या नहीं करते हैं, बट वी आर फॉर्चुनेट इनफ, वी आर एबल टू हेल्प द एस्पायरेंट्स हु नीड्स इट. आई एम फाउंडिंग यू अ वेरी सिंसियर एस्पायरेंट. Thank you, अपने sir. पास जो एस्पायरेंट सिंसियर होता है, उसमें बड़ा इंटरेस्ट अपने को आता है. इफ गॉड विलिंग यू विल सेल्फ. ओके, बाय. सर. प्रणाम सर.